एक्शन काफी मुश्किल होता है एजुकेशन और लिटरेरी गेम्स totally change over here. I mean, this is end. Asim, you can start now. Okay, thank you very much, everyone, for joining us in our live session. So today I will be keep sharing with you what exactly the ETL. Not only we are going to keep presenting the information about the ETL, but our main core topic should be how you can develop a skill if you would like to become an ETL tester. How many of you guys already knows about the ETL testing? Any idea? Yeah, yes, please. As the name says, it's write, transform, and load. Okay. So it's talking about getting data from some source, processing it, maybe doing the quality checks on the data, transforming it, removing any sort of the unwanted things that are there in the data, and then loading it on the data. Okay, perfect. Anyone else? Okay, so the point is here, the ETL, just like we know, we used to keep doing the testing on the GUI testing. Plus, I would like to say we need to keep validating the different scenarios, web application testing, enterprise level application testing, automation testing. But this testing is another specialized area. I would like to say in a simple words, you heard about the terminology heart specialist, ENT specialist, orthopedic. So these are all the specialized areas. So what if, in a similar way, testing have all the different dimensions now. It's a vast sea. You cannot summarize all these things in a one, particular segment. So we would like to see our today agenda, what we are going to cover now. So if you see in this slide, we will be keep discussing a little bit about the ETL, and then I will be keep letting you know that if you would like to become a part of this specialized area, what exactly the learning paths you need to cover up and become yourself as a master in ETL testing. And then we will be keep discussing with you the key points that you need to be mandatory to learn about those areas. And last point is all about how much time you need to become ETL testing. This is the one of the most interesting question everyone else will definitely ask in today's session. So before proceeding further, let me introduce myself. My name is Asim Noaman Lodhi. I have more than 14 plus years of experience in IT sector. These are my few achievements. I am a certified Google Analytics partner, Google partner. I did various certifications this year, and all my areas are keep developing the competency in the field of data scientist area, as well as to becoming a part of ETL testing now, because this is the future of testing. And most of the times when we are doing the testings, our main area will remain canvas only for the GUI testing now. Or lots of people are concentrating on the automation tools. But these areas we are compromising. So what if I would like to ask you, you are working in a banking application, or you are testing in a banking application or enterprise level applications. So each and every single enterprise level application should have a backend testing. So whenever the term will come as a backend testing, what exactly the things you need to keep in your mind? And if the bank, having a large set of data, the millions of records, you know about the data migration testing, you know about the database testing, but this testing is all about more comprehensive. This is a complete umbrella. Under this umbrella, all these kinds of testing will come now. So the question is, what exactly the point we need to understand the ecosystem of ETL first. So the ETL, I would like to say, just giving you a small brief about the ETL testing. So ETL is, as you said before starting this lecture, it is a process of warehousing used to extract the data from the database. You can keep extracting the information from the database, or you will be able to keep extracting the information from the multiple databases. In a simple words, technical words, this is called as the heterogeneous data. So when we will be keep saying about the heterogeneous data, this means the data is not in a consistent form. So if the data is not consistent form, how you will be able to, first of all, the big challenge will be to keep extracting the information. Once, this is the end part, to keep extracting the information. Once you will be extracting the information, the second part will come, which is called as the extract the information. And the extracting, when we are keep talking about in this area,
Here, we need to keep fetching our required expected data, which customer is expecting from us. For example, I am testing ABC bank application, and bank is saying to me that you need to filter those records who were keep getting the loan last year, last couple of 2 years back, and how many people they belongs towards a particular city. Like they are targeting for the Lahore or they are targeting for the Karachi. So this is the business requirement, and they are also keep expecting the data should be in a complete and comprehensive and integrated form now. Like the data should be in a meaningful way. So how we can overcome this challenge? So this is the area we are keep gathering the information. Once, number one, we are getting the information, we know about the databases, data sources, and then we keep fetching our expected information, and the last part will come the transform, second last part. What is mean by transform? So Sunny is giving, the business order, and he said, Asim, just filter me these records whose demographic informations they are male, their ages are 25 to 40 years, and I want to see that they are keep living in the Lahore city. So keep providing me the information, how much loan they have taken out. So there are two entities will involve. One is the ETL developer. They will be keep getting and writing some of the code snippets and functions for fetching the information. And the question is, what exactly the role of QA? The role of QA person should be, he or she will be the person who needs to validate that the code snippet, the development team, they have written and fetching the functions, they are meeting the expected results or not. Here your part will come now. So now I would like to show you some basic terminology here to learn and understand more about the data. So when we are talking about, there are two important terms we need to focus whenever we will be keep talking about the ETL testing. First of all, what is the difference between the data warehouse and versus the data lake? So the data warehouse, as you can see in start of the lecture, I was keep sharing with you, like the data warehouse is the one, these are the heterogeneous data. Like one data for any particular university, they have the different campuses in Lahore, Gujranwala, Karachi, or all over the country now. So each and every university, let's say, if they are not in an integrated form, if they don't have the enterprise level application or don't have the centralized ecosystem now. So each city data operators, they will be keep managing their different databases. So the university requirement, the dean requirement is they want to see how many students registered in Lahore campus for this winter, and how many students registered in Gujranwala, and how many students registered in Karachi. So these data, they will be keep coming in the form of data lake. Data lake is the area which is called as, I would like to say, where everything will come now. It's a raw form. Like there can be the flat files, there can be the structured data, and there can be the unstructured data. What is the difference between, by the way, structured and unstructured? Anyone else online, you guys would like to share your thoughts? What is unstructured data, by the way? The data that is not stored in the database in a sorted way. Okay. So in a simple words, the data which is not in a proper structurally presentable. Like they can be in a flat file, the data can be in a text files. And even you have seen the format of the CSV files, if you just keep opening in the notepad, you will be able to see that the column name is also be on the first row, and then there all the data will be keep specified in the form of separated column. So this is the simplest example of the unstructured data. So being as a tester, here the question will come, how we can keep integrating that unstructured data in a structured form. This is the area which we need to understand. This is the area where ETL tester come up into the main area, main stage, and they need to keep validate the insurity of the data. So let me explain to you one more thing here. You can see that whenever the data is coming from the heterogeneous data, so here, as per the business requirements, we have seen when client will be keep presenting us, like you need to keep presenting us this data, you need to keep presenting us for this particular city data, or you need to keep presenting us that how many accounts opened, or they will be keep asking you
one simplest example I would like to share with you. You have seen ever, whenever you are going in a bank and asking for a bank statement, more than 30 days, what will be their answer? Did you able to get your bank statement within a 30 days, more than 30 days? Any thoughts? बैंक से बड़ी go and you get it like that. आप जब भी 30 डेज से ज्यादा की बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे डाटा चाहिए, तो बैंक आपको आंसर करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन पे ये जरा फॉर्म फिल करते हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग नाउ, दो चीजें होती हैं. एक आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल डाटा होता है जो रियल टाइम आपके पास जो 30 डेज की आपकी जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है. और एक अगर होता है आप उससे 6 मंथ्स का बैक का डाटा चाह रहे हैं, या जैसे एफबीआर में आपने अपनी कोई वो करवानी है, टैक्स रिटर्न्स करवानी है, तो आपको उसके लिए भी फॉर्म फिल करना पड़ता है. अब वो क्या करते हैं, उनका ऑफलाइन सिस्टम्स होते हैं. उस ऑफलाइन सिस्टम से दोस ऑफलाइन सिस्टम्स आर कॉल्ड एज देयर डाटा वेयरहाउस. वो उस वेयरहाउस से अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि लास्ट 1 ईयर का डाटा जो है वो आपका जो है दिशांत का जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या समी का डाटा जो है वो फेच करके ले आए. सो दिस इज हाउ द रोल ऑफ डाटा वेयरहाउस विल कम. जो आपके रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर आप कभी भी, क्योंकि अगर आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स बैंक की ट्रांजैक्शंस के अंदर उसको ऑफलाइन डाटा को ऑनलाइन डाटा के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो हाउ मच मेस विल क्रिएट. तभी आपने नोटिस किया होगा व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एटीएम, और एटीएम के ऊपर जाके अगर आप अपने पिछले 2 साल की ट्रांजैक्शंस देखें तो एटीएम की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठप है. This is the practical and real example of your data warehouse. Here the data warehouse will come. और ये सारा का सारा जो डाटा लेक है ना, ये बैंक के लेट से अ बिग एक डाटा वेयरहाउस में वो सारा का सारा स्टोर. अब जिस यूजर को जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी ट्रेंडिंग देखनी है. वेयर विल बी योर कंपनी आफ्टर 5 years and what will be my future forecast for my sales and marketing. So अब उस चीज को भी वैलिडेट करने के लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? You must have a data. और वो डाटा कहां से आएगा? वो डाटा आता है वो बैंक के ऑफलाइन सिस्टम्स के अंदर, जिसको हम डाटा वेयरहाउस कहते हैं. Another simplest example, if you have observed, if you are moving towards the metro or any big the mart, they have also their separate data warehouse. And whenever the items quantity will be moving towards the zero or meeting their minimum thresholds, so they will be keep picking those items and keep presenting in their wardrobes. So this is the another example of data warehouse. अब ये तो हमें पता लग गया कि data warehouse क्या होता है और data lake क्या होता है. So first of all, this is the main area. If you would like to become as a ETL tester, you must know and understand about the foundation of the data warehouse concepts. आपको ये पता होना चाहिए कि data warehouse होता क्या है और data lakes के concepts क्या होते हैं. Data lakes is all about keep coming, हर चीज यानी कि इसके अंदर आता है, यानी आप करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जब whenever you are keep getting the information, you need to keep fetching and enriching the data. अच्छा, अब आपको एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखा दें. Don't worry about that. This is the practical example of the ETL system. So whenever we are saying about the data transformation, these are the things being as a QA tester needs to perform. And what exactly those things are? First of all, you need to understand that these are all the different sources. अच्छा, sources क्या हो सकते हैं? वो आप देखें, big data cloud से भी data आ सकता है, वो CRM से भी डाटा आ सकता है, वो कैफका से भी डाटा आ सकता है, वो आपके क्लाउड से आ रहा है डाटा, वो आपकी ऑरेकल डेटाबेस से आ सकता है, IBM की डेटाबेस से आ सकता है, सेल्सफोर्स से डाटा आ सकता है, वो आपके कोबोल से डाटा आ सकता है, CSV फाइल, JSON फॉर्मेट, VB, XML, और आप ये देख लें सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, वो आपका पावर पॉइंट से भी डाटा आ सकता है. नाउ सी हाउ मेनी टाइप्स एंड वर्सेटिलिटी ऑफ द डाटा that we are keep getting. And here a big opportunity, those people who just whenever they will be keep feeling that after the GUI testing or web-based application testing or the automation testing, they feel that we done our job. But if you are working for an enterprise level application, the banking domain application testing you are doing now, or if you are keep testing about insurance domain, in simplest words, if you would like to ask me where will be the application where the data warehouse concept will come. So most of the domains are related towards the insurance domain. Then the telecom domain.
Another domain, medical domain. Did you guys ever notice that even whenever the scientists, they will be keep compiling the data for the COVID vaccination, what they are doing now? They are keep getting the data and storing the data in their warehouses, not a physical warehouses like the cloud, and maintaining that ABC vaccination, how much effective it is, and how they are making a decision that this particular vaccination you need to require 2 doses or 3 doses. This is all about the decision they are making on the transformation. So once you are having all the different kind of sources and all the different kinds of structured data, unstructured data, here the part will come ETL transformation. What is mean by ETL transformation? क्या आप में से कोई बता सकते हैं any knowledge ETL transformation? Online वाले लोग काफी खामोश बैठे हैं. Guys, would you like to share anything? I think your camera is off. It's already keep sharing now. Screen is. No, the camera. I take button over mic का camera का वो off हो गया. Oh, yeah. Okay, so I think everyone see me now. Online people, guys, are you able to see me? Yes. Okay. Yes, we can see. Anyone else would like to share your thoughts regarding data transformation, ETL data transformation? What does this mean by ETL transformation? I think it's sort of to convert the data into a meaningful form, just like ETL start from extract, transform, and load. So maybe it's kind of this. Okay, ये तो हमने देखी है ETL में extract, transform और load. But the point is, being as a QA tester, आप उस चीज को कैसे perform करेंगे? Any idea? Anyone else would like to share any thoughts? आप अगर इस डायग्राम को देखें तो आप being as a tester, what exactly the activities you are, the management or the client is expecting from all of you? They are keep saying that you need to verify first of all the data. अच्छा, डेटा वेरीफाई किया, बैंक कहता है मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स लेके आओ जिन्होंने लास्ट 2 इयर्स के अंदर मोर देन 50 लाख तक लोन जो है हमारे से गेन किया है, और वो वाले रिकॉर्ड्स लेके आओ जिन्होंने लोन जो है वो लेस देन 50,000 एंड ग्रेटर देन 20 लाख फ्रॉम सिंस लास्ट मोर देन 2 इयर्स. अब ये जो इंफॉर्मेशन है आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करना बीइंग एज ए टेस्टर. अब यहाँ पे 2 एंटिटी है, अगेन द बी एंड बी मॉडल. डेवलपर भी आपके साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड बीइंग एज ए टेस्टर्स यू आर नीड टू बी कीप सपोज्ड टू बी कीप वैलिडेटिंग दैट एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन. एंड वंस यू अंडरस्टैंड द वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन यू नीड टू फिल्टर द डाटा. अब फिल्टर द डाटा क्या है? अब रियल टाइम आपने जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने शेयर की है कि लास्ट 2 इयर्स के लोन्स की इंफॉर्मेशन फेच करके लाए, या लास्ट एक कंपनी कहती है बिग एंटरप्राइज कंपनी, they will be keep saying that how many people, what will be the turnout, employee turnout since last more than 5 years. How we can get that information? Again, this is all about the filtering the data. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है फिल्टर कैसे डाटा करते हैं? आप फिल्टर करते हैं टूल्स एंड टेक्निक से. अब वो कौन कौन से टूल्स हैं हम इसको आगे डिस्कस करते हैं. क्लेंजिंग क्या होता है? अब जो डाटा आ रहा है आपका लास्ट 2 ईयर से 5 ईयर से, जिसका मैंने आपको कहा वो स्ट्रक्चर भी है अनस्ट्रक्चर भी है. सो दीज 2 फॉर्म्स को आपने मीनिंगफुल बनाना, उस चीज को कहते हैं डाटा क्लेंजिंग. सो द डाटा क्लेंजिंग इज द पार्ट यू आर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द डाटा. अब देखिए ना, अब बहुत सारे लोग होते हैं, सिंपल एग्जांपल के अंदर आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अगर मिलियंस का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है, और उसके ऊपर कुछ डिसीजंस लेने तो उनमें से मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितने थे. अब जब डाटा को वैलिडेट करने लगे तो पता लग रहा है कुछ लोगों ने क्या किया है, जो जेंडर का कॉलम होता है, जेंडर के कॉलम के ऊपर कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने इस तरह लिखा हुआ है मेल्स, और कुछ ने लिखा हुआ है एम, और कुछ ने लिखा हुआ है फीमेल, और कुछ ने लिखा हुआ है एफ. What does this mean? This means data is not in a consistent form, and here you need to keep normalize and data cleansing will part. अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि यार क्लाइंट कहता है कि ये जो मेल पूरा लिखा हुआ है ना, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आउट ऑफ 2 मिलियन रिकॉर्ड्स, इसमें से 1 मिलियन रिकॉर्ड लेट्स से किसी ने फीमेल पूरा लिखा है, किसी ने सही लिखा है, लेट्स से हमने फाइंड आउट किया 50,000 रिकॉर्ड्स, दोस आर नॉट ए कंसिस्टेंट वन.
So after applying the validations and after applying the data cleansing activities, ensuring the data quality rules, you need to specify the business requirement only mails you need to replace. Replace this keyword with this one. So this is the beauty of data warehouse. This is the specialized testing areas which not even a single person can do without understanding the ecosystem of ETL transformation. And then normalizations, lookups. Lookups is all about for filtering and searching a specific records. के सनी के नाम से या आपके नाम से कितने लोग हैं जिनके कितनी ट्रांजैक्शंस आपने किए लास्ट 2 years के अंदर बैंकिंग के अंदर एबीसी बैंक के अंदर. So आपकी सारी इंफॉर्मेशन with the help of lookups you can find out. And then reformatting. अच्छा reformatting क्या है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक जो डेटा है जो प्रेजेंट हो रहा है आपके पास एक कॉलम आ रहा है जिसको हम कहते हैं फुल नेम दैट्स से आसिम नोमान लोधी और ये कॉलम का जो नेम है ये बेसिकली आई वुड लाइक टू से दिस कॉलम कॉल्ड एज माय फुल नेम. बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इस फुल नेम के कॉलम को सेपरेट करना है 2 कॉलम्स के और 2 कॉलम्स क्या हो सकते हैं कि आप इसका पहले फर्स्ट नेम सेपरेट करें और लास्ट नेम सेपरेट, यानी कि इसको तोड़ दें आप. फर्स्ट नेम के अंदर आसिम है, लास्ट नेम के अंदर लोधी है. द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन डू. अगेन द टूल्स विल हेल्प. In the next slide, I will be keep letting you know what exactly the skill set, the tools, if you will be keep learning those areas, those learning paths, you will developing this particular skills. And last thing is enriching the data. Whenever the point will come as enriching the data, what does this mean? Enriching the data means to make the data available for in front of the business users. So the business users are the one, let's say Mr. Asim is our business user, and they are expecting a very beautiful, in a clean way on a particular dashboard. He does not have time to look the millions of records. He wants to see in a pie chart, in a bar charts, and he just needs to know what exactly the trends for last 5 years or where my company will be after 5 years or 10 years. So this is all the things you can do. Being as a ETL tester, you need to learn all these things. And once you will understand and learn all these things, then the question will come, what we need to do? अब डेटा को सोर्स से तो फेच कर लिया, उस पे आपने बिजनेस अप्लाई कर ली, फेच करके बिजनेस अप्लाई करके उसके ऊपर कंडीशंस लगा के फंक्शंस लगा के लास्ट पे आपके पास आता है डेटा की लोडिंग. यानी अब आपने उस डेटा को जो आपने बिजनेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए आपने उसको कहीं पे लोड भी करना है और जो डेटा को लोड करना है वो भी क्लाइंट के किसी ना किसी स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे होगा या क्लाइंट ने आपको स्पेसिफिक डेटा वेयरहाउस शेयर किया होगा कि आपने इसके ऊपर. सो दैट इज द एरिया यू नीड टू अंडरस्टैंड. अच्छा अब इस पे लर्निंग पाथ्स की बात कर लेते हैं. वी स्टिल हैव 15 मिनट्स. अगर आपने ETL टेस्टर बनना है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप है, मैं इसका भी आप लोगों के साथ शॉर्टकट भी शेयर करता हूं. बट फॉर ए आइडियल ETL टेस्टर or getting the mastery in ETL testing, as per my 14 years of experience, which I was observing while keep working in different kinds of domain areas, you need to understand first of all the data analytics. जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि डेटा को स्टडी कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं. आपने कभी ये मैरिज ब्यूरोज वगैरह किसी का इत्तेफाक हुआ हो, सो यू हैव सीन के वो जो मैचेस करवाते हैं फीस आपसे लेते हैं, ये भी एक बिजनेस मॉडल है जिसमें वो क्या करते हैं डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक, दे आर कीप इवैल्यूएटिंग योर ईच एंड एवरी पर्सनल इंफॉर्मेशन. अच्छा वो क्या कर रहे होते हैं, दे आर कीप डेवलपिंग द कंप्लीट एनालिसिस कि यार इस मैच, इस प्रोफाइल के लिए, इस XYZ जो है मेल और फीमेल के लिए, दे आर दी सुटेबल फॉर दिस. आपने अगर कल को कोई मैरिज ब्यूरो खोल लिया है, लेट्स से, एंड इफ यू आर नॉट बी एबल टू कीप हैविंग द एनालिटिकल स्किल्स और आप रैंडमली डिसीजन ले रहे हैं, नो वन वुड लाइक टू कीप कमिंग इन योर शॉप.
So similar is the case when we are talking about the data warehouses. First of all, you need to understand the data analytics skills, which is one of the most important things. Without analytics skills में क्या है कि डेटा को आपने डेटा है क्या, डेटा से रिलेटेड कभी भी कोई भी बिजनेस ऑनर आपसे शेयरिंग इंफॉर्मेशन करता है, आप उससे सवाल पूछिए कि आप इससे चाह क्या रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, डेटा को लोड करवा के हमने करना क्या है। और नंबर थर्ड आपके पास जो एनालिटिक्स के अंदर चीज आती है, आपने डेटा को किस तरीके से इनरिच करना है और वो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे मीट करना है। सो दिस इज कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फर्स्ट माइलस्टोन। सेकंड माइलस्टोन, यू मस्ट अंडरस्टैंड द एसक्यूएल लैंग्वेज। How many of you guys knows about the SQL language? Online guys, would you like to share your thoughts? It's a structured query language which is used to get data from system. Just like if you want to get data of a person who has a maximum salary, so we can do it by the help of a structured query language. How many times in real-time testings you are using the SQL queries whenever you are testing the database applications? I think when we are validating some field, so we use this SQL query. Being the best practice, I strongly recommend and suggest, if the client is saying or not about the data validation, you must needs to keep validating the backend as well. So make this habit. And if you are moving towards the ETL testing learning path, you must know about the one-to-one relationship, one-to-many relationship. You must know how to normalize the data, how you can apply the joins. There is a website, I strongly recommend everyone, please note down this website name, w3schools.com. So just visit that website and start learning the SQL from scratch there. Okay, let me write down here. So this will help you for future. The name of the website is w3schools.com. So those who are unable to see online, guys, you can just zoom this canvas and you will be able to getting the idea. This is, I strongly recommend this website. I learned so many times the SQL language from here as well. Then the third point will come the problem solving capability. मैंने आपके साथ example scenarios share किए कि यार मुझे बैंक के वो वाले loans वाले लोग लेके आओ जो सामा ने last 2 years में कितना loan लिया, ठीक है, मुझे वो वाले लेके आए जो अजीम साहब ने last 5 years में कितनी transactions की, मुझे वो वाले रिकॉर्ड लेके आए कि जो मेरे लास्ट ईयर्स की मैंने रिटर्न्स करनी है एफबीआर में, सो आई नीड टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। और री इंश्योरेंस डोमेन, और इंश्योरेंस डोमेन में सबसे ज्यादा ईटीएल टेस्टिंग फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्यों? इंश्योरेंस में क्या होती है, एक बंदे ने 10-10, 20-20, 25-25 साल की इंश्योरेंस करवाई, सो इन दैट पर्टिकुलर डोमेन अगर आपको उसका डाटा फेच करना पड़ जाए, उसकी टेस्टिंग करना पड़ जाए, तो यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। नेक्स्ट क्या आपके पास आती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस पाइथन। जो लोग ऑटोमेशन करते हैं उनके लिए तो दे मस्ट नीड्स टू लर्न अबाउट द पाइथन लैंग्वेज। If you are having a plan for doing the transactions from the automation testing towards the ETL testing, you must need to understand and learn practically the Python language. और इसके ऊपर Coursera के अंदर बहुत सारे courses हैं, you can get and learn from there, or you can, the most important I would like to say, YouTube is one of your best teachers, where you can get millions of tutorials. But the only thing you cannot make excuses कि आजकल के दौर के अंदर 10 साल पहले मैं और आप कह सकते थे कि मेरे और अजीम के दौर में अगर लेट से इतना कंटेंट नहीं था, लेकिन आजकल तो हर एक के पास एक्सेसिबिलिटी है, हर कोई नॉलेज शेयर कर रहा है, सो यू कैन नॉट से दिस थिंग आई कैन नॉट लर्न नाउ। फिर आपके पास आती है पावर लैंग्वेज। ये मैनुअल टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं, आप ये यकीन माने पावर क्यूरी सीख लें, यू आर ऑसम व्हाइल डूइंग द ईटीएल टेस्टिंग। और इसको स्टार्ट कहां से करें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। टाइम कम है, मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो नहीं करके प्रेजेंट कर सकता, बट जस्ट गिविंग यू द थॉट प्रोसेस। आज आप लोग अपनी एक्सेल शीट को ओपन करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको एक मेन्यू नजर आएगा, उसमें उसका नाम है डेटा। तो डेटा के मेन्यू के अंदर आपने जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगी पावर क्यूरी। कीप
start learning Power Query from internet. For your information, इसके ऊपर हम लोग comprehensive अपने programs भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें सिखाई गई. And then the next point is the conditional formatting. Conditional formatting क्या है? जिस चीज को हम लोग कहते हैं ना मेकअप करना. आपको कोई देखने आए, आप बड़े सूटेड बूटेड होके तैयार होके सेशन करवा के प्रेजेंटेबल फॉर्म में जाएंगे. सो सिमिलर इज द केस कि डेटे को मीनिंगफुल तो बना दिया, अब उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसको एक बड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर करना, और उसको आपने क्लाइंट को इस तरीके से प्रेजेंट करना, टेबल फॉर्म के अंदर करना, सॉर्टिंग फॉर्म के अंदर करना, असेंडिंग ऑर्डर में. ऐसा ना हो यार कि मिस्टर सनी विल बी कीप लुकिंग, ही इज द बिजनेस ऑनर एंड ही इज कीप वैलिडेटिंग द डाटा, और कुछ जो सबसे हाईएस्ट जो सेल्स थी वो नीचे शो हो रही है और लोएस्ट सेल ऊपर आ रही है. व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी आर कीप गेटिंग? The data is not in a proper format now. So formatting करना सीखें. और again I would like to recommend you start from Microsoft Excel, MS Excel. आप Excel को बेस बना के ETL को सीखना शुरू कर दें. दो आपको मैं फार्मूले बता रहा हूं आज इस ट्रैक के ऊपर आने के लिए. एक पावर क्यूरी को पकड़ लें, SQL के ऊपर फोकस कर लें, और नंबर थर्ड आप इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना शुरू करें. फिर उसके बाद क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखें. कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसे एक्सेल के अंदर होती है, इसी तरीके से कुछ टूल्स हैं उसके अंदर भी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स होती हैं. वो ETL टूल्स होते हैं जैसे इंफॉर्मेटिका वगैरह. अदर देन दैट आपको नॉलेज होना चाहिए R लैंग्वेज का. R लैंग्वेज इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लैंग्वेज फॉर डूइंग योर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आपने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ये डेवलपर्स कर रहे होते हैं, तो अगर आप ऑटोमेशन इंजीनियर हैं, आपके लिए तो ये बहुत ही आसान हो इस ट्रैक को अपने अडॉप्ट करने के लिए. अदर देन दैट यू मस्ट नो अबाउट द पावर BI फॉर रिपोर्टिंग. अब QA टेस्टर को पावर BI की रिपोर्टिंग और इनकी भी टूल्स के ऊपर अपनी ग्रिप होनी चाहिए. एंड देन यू नीड टू हैव द डाटा विजुअलाइजेशन की बात जब आती है तो टैबलियो आता है आपके पास. एंड आफ्टर दैट इंफॉर्मेटिका डेवलपर टूल, इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी कॉम्पिटेंसी भी काफी वर्किंग की और इस पे हमने पूरी की पूरी अपनी एक लाइन डेवलप की है कि इंफॉर्मेटिका के टूल्स को यूज करके आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. अब मैं आपको देसी नुस्खा बताने लगूं जिसको फॉलो करके 4 चीजें कर लें आप, उन बाकी के 10 आइटम्स को छोड़ के आप ETL टेस्टर बन जाए. और वो 4 चीजें क्या है? पहली चीज, आपको टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए. हर चीज की बुनियाद आपकी मैनुअल टेस्टिंग. आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आप किसी फंक्शनल एरियाज में अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाह रहे हैं, आप डिजिटल बैंकिंग, कोर बैंकिंग के अंदर एप्लीकेशंस को टेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी डोमेन में आप जाना चाह रहे हैं, जब तक आपको फाउंडेशंस ऑफ टेस्टिंग करनी आइडिया होगा, यू कैन नॉट बिकम अ टेस्टर, ETL tester, sorry. The second part, knowledge on SQL language. This is the backbone, no matter whether you are doing the ETL testing, no matter whether you are doing the traditional kind of testing. Traditional testing क्या है? आपने डेटा को माइग्रेट कर दिया. अब ये आपने एक माइंड में अपनी, किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा ना ऑनलाइन से ना ऑफलाइन से, कि यार ये जो डेटाबेस टेस्टिंग और माइग्रेशन टेस्टिंग में और ETL टेस्टिंग में क्या फर्क होता है? जो डाटा माइग्रेशन टेस्टिंग होती है उसमें आप ETL कॉम्प्रिहेंसिव अप्लाई नहीं करते. माइग्रेशन में आप जस्ट मैपिंग को इंश्योर करते हो कि डाटा आपका जो है सोर्स से टारगेटेड में एज पर द मैपिंग ट्रांसफॉर्म और नॉट. बट ये जो ETL है, ये रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि बिजनेस यूजर्स के लिए, ट्रेंडिंग के लिए, इज ऑल अबाउट टू मेकिंग द डिसीजंस फॉर देयर फ्यूचर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. ठीक है ना? और डाटा मैपिंग में फिर हम लोग क्या फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे होते? जिस तरह आपने कहा है कि उसमें हम सिर्फ मैपिंग को माइग्रेशन में देख रहे होते हैं और ETL में तो हम प्रॉपर उसकी फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं. यार देखिए, जो मैपिंग है ना, सॉरी, मैपिंग के अंदर आप लोग करते हैं कि डाटा की जो आपके लेट से 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो 1 मिलियन रिकॉर्ड्स यू आर टारगेटिंग के सेम एज इट इज, दे विल बी कीप ट्रांसफॉर्म इन योर टारगेटेड सिस्टम नाउ. लेकिन जो ETL है ना, ETL के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, डाटा की क्वालिटी को आप इंश्योर करते हो, डाटा को आप मीनिंगफुल बनाते हो. आप कहते हैं कि यार मुझे सिर्फ वो वाले डाटा सॉर्ट करके लेके आ जाओ जो लास्ट 2 इयर्स के अंदर जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, या लास्ट 5 इयर्स के अंदर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स बेसिकली दे विल बी कीप कमिंग अंडर द एजेस ऑफ 40 to 60 इयर्स. आप उसमें से चंक्स उठाते, लेकिन जो आपकी
जो डाटा माइग्रेशन है उसके अंदर आप ETL का डिटेल प्रोसेस नहीं चलाते, जिस तरह आपको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर डिफाइन किया। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस, थैंक यू। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है, कितना टाइम चाहिए? आप अपनी लाइफ के 1 साल के अंदर 3 मंथ्स दे दें और 3 मंथ्स के अंदर डेली बेसिस पे 3 घंटे आप दे दें। हमारे प्रोग्राम्स इसी तरह डिजाइन हुए होते हैं, और 3 आवर्स डेली बेसिस पे आप अगर इन्वेस्ट अपने ऊपर करते हैं within a 3 months, I can assure you, based on my experience and personal judgment, you become yourself as a ETL practitioner, not a practitioner, a ETL tester, and start doing testing for any kind of enterprise level application, a banking application.